हेलो एवरीवन, वेलकम टू थर्ड सेशन ऑन वोकैबुलरी थ्रू रूट्स। मुझे लगता है कि हमने जो पिछले कुछ सेशंस किए हैं उनसे आपको ज़रूर बेनिफिट मिला होगा। सो आज मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स लेके आया हूँ। स्लोली एंड ग्रेजुअली जो हमारा मोमेंटम है वर्ड्स को लेके वो बिल्डअप होता जाएगा, वेयर एंड आई विल कवर सम गुड वर्ड्स, एंड आज का हमारा सेशन कुछ उसी का ही रिफ्लेक्शन है। सो लेट्स टॉक अबाउट मैन एंड स्टार थ्योरी। डू यू एवर वंडर व्हाई a person who tells our future is called an astrologer, or why a person who studies stars is called an astronomer? इसका रीज़न है। सो I've brought to you a couple of roots जो इन वर्ड्स को ब्रेक करेंगे एंड आपको वो रूट्स वहाँ पे पता चलेंगे। सो लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस दीज वर्ड्स। सो द मैन एंड स्टार थ्योरी, इन वर्ड्स के अलावा मैं आपके साथ और भी बहुत सारे वर्ड्स डिस्कस करूंगा जो इन रूट से बनेंगे। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट टू वर्ड्स, astronomer and astrologer. Now, astronomer is a person who studies order of stars. If you look at astronomer, it's actually made up of two roots. First is aster. अगर मैं first root की बात करूं, it is aster. Aster का मतलब होता है star. And अगर मैं second root की बात करूं, it is nomos. Nomos is order or rule. So, अगर आप इन दोनों रूट्स को ऐड करते हैं, you get astronomer, somebody who studies order of stars or celestial bodies. Astrologer. Now, how is astrologer related to stars? Generally, stars impact our day-to-day lives. So, as stars, impact our day-to-day life, and logos, जो कि एक रूट है जिसका मतलब है science और study. So, इस study में क्या होता है? We try to find out impact of stars on human lives. The next is again, something related to stars. Generally हम लोग बोलते हैं कि stars are not working for you. So if something goes against stars, it's called a disaster. Let's look at the next set of words that we get from aster. So the next word is asterisk. अब asterisk क्या होता है यार? Asterisk is a star shaped symbol. एक छोटा सा स्टार होता है जिसमें यूज किया जाता है टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए। स्टार लगा दिया जाता है और नीचे स्टार के आगे लिखा जाता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। सो एस्टरिस्क इज अ स्टार शेप्ड सिंबल। द नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्रोनॉमिकल। नाउ दिस इज वन वर्ड जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं कुछ महंगी चीज़ों के लिए। ये पर्टिकुलर वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं कुछ महंगी चीज़ों के लिए। जैसे हम लोग बोलते हैं फ्यूल प्राइसेस आर राइजिंग, सो हम लोग उसके लिए बोल सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल फ्यूल प्राइसेस। So something that is very costly can be called an astronomical thing. Catastrophe is again one word where something goes against stars and the event turns out to be disastrous for everyone. Right, so that's catastrophe for you. अगर आप देखें यहाँ पे हमने रूट्स डिस्कस किए थे एस्ट्रोनॉमर के लिए। द रूट वॉज एस्ट्रन एंड नोमोस। द नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्रोफिल। नाउ देर आर सम पीपल हु आर नॉट एस्ट्रोनॉमर्स, वो शायद ऐसे कोई कोर्स नहीं करते हैं या फिर that's not their profession, but there are some people who are willing to look at stars. So these are astrophil. Astrophil are those people who love to look at stars. Stargazing is one activity, it's their favorite pastime. So astrophil is somebody who studies astronomy not for the sake of profession, but just because he or she loves to look at stars or celestial bodies. So that's astrophil for you. अगर मैं next set of words देखूं, देखिए autonomy is one word, taxonomy, misnomer, anomalous, ये कुछ words हमको देखने को मिलता है। मैंने आपके साथ यहाँ पे अभी एक root डिस्कस किया था। astronomer actually comes from nomos. nomos का मतलब क्या होता है? nomos is order और rule. nomos is order और rule. तो autonomy की बात करें, auto is self, nomos is order or rule. So autonomy is self order, self governance, where you don't come under anybody's jurisdiction. Taxonomy की अगर बात करते हैं, taxonomy is science of classification, where things are classified on the basis of similarity. They are removed from a particular order on the basis of dissimilarity. So taxonomy is science of classification.
मिसनॉर्मर की बात करें, मिसनॉर्मर कैन बी एन आइटम जो किसी पर्टिकुलर हेड में रॉन्गली क्लासिफाई हो गया. दिस एक्चुअली कम्स फ्रॉम मिस comes from meson, which is bad. ठीक है, so that's bad classification for you. So misnomer is basically an item that's wrongly classified under a particular head. Now anomalous actually comes from anomaly. Anomaly होता क्या है यार? Anomaly is deviation from standard or deviation from order. So anomalous क्या होगा? Anomalous is something that deviates from standard or norm. So आपने देखा ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं नोमोस से आए हैं. इफ आई लुक एट नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स जो हैं वो आते हैं ऑटो से. मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया ऑटो का मतलब क्या. ऑटो इज सेल्फ. सो लुक एट अ कपल ऑफ वर्ड्स दैट वी गेट फ्रॉम ऑटो. फर्स्ट इज ऑटोक्रेट. नाउ ऑटोक्रेट इज अ रूलर, an absolute ruler who basically tries to use his power in cruel manner. ठीक है, ऑटोक्रेट हो गया. ऑटोक्रेसी इज पर्टिकुलरली क्रूअल रूल. ठीक है, जहां पे वो पर्सन जो है किसी और के ओपिनियंस को अलाउ नहीं करता. दैट्स कॉल्ड ऑटोक्रेसी. ऑटोप्सी एक्चुअली कम्स फ्रॉम ओपिसिस. ऑटो का एक और मीनिंग होता है विच इज डेड. सो बेसिकली ऑटोप्सी इज पोस्टमार्टम, study of dead tissues under microscope. So that's autopsy for you. So auto के दो meanings है. First is self, second is dead. I hope आपको ये सारे words जो है वो अच्छे से समझ में आए. So let's move to next slide. यहीं से मतलब जो हमने अभी डिस्कस किया क्रेसी, जहाँ पे ऑटोक्रेसी हमने डिस्कस किया था, उसी का ही मैंने यहाँ पे रूट रखा हुआ है. एंड देयर इज अनदर रूट कॉल्ड आर्च. आर्च इज चीफ. So there are a lot of words that we can form from these roots. Let's look at the first set of words. So the first word is archbishop. Now archbishop is, bishop who holds highest rank in the order. You can also call him chief bishop. Next word देखें, that's archfiend. Fiend is devil or evil. अगर मैंने इसके आगे arch लगा दिया, so this actually becomes archfiend. Archfiend is somebody who is the devil or the chief person or the chief evil person. Next is arch rival. Rival is your competitor or your opponent. So अगर मैंने इसके आगे arch लगा दिया, it becomes arch rival. Arch rival is somebody who's your chief competitor or chief opponent. Next is monarch. Monarch is a person who holds absolute power. Now ये ज़रूरी नहीं है कि मोनार्क और ऑटोक्रेट सेम हो. मोनार्क इज अ पर्सन हु होल्ड्स एब्सोल्यूट पावर, सिंगल रूलर. कभी कभार मोनार्क और ऑटोक्रेट जो है वो सेम भी होता है, बिकॉज इफ अ मोनार्क ट्राइज टू एक्सरसाइज हिज रूल और हिज पावर इन अ क्रूअल मैनर, ही ऑटोमेटिकली बिकम्स ऑटोक्रेट फॉर यू. नेक्स्ट देखिए, दैट्स पेट्रियार्क. पेट्रियार्क कम्स फ्रॉम पेट्रिस. Patriarch comes from patris, which is father. Arch actually comes from rule. So patriarch is somebody who is male head, or somebody who is a male head of a family or a tribe is patriarch. अगर आप oligarchy देखें, so oligarchy is ruled by few powerful individuals who hold command over a particular area or country. Oligarchs are those chief people who hold command. Hierarchy is order of rule. ठीक है, so this actually arch is chief, rule उसी का ही चलता है. Hierarchy is order of rule. Next set of words comes from crazy. Crazy का मतलब होता है to rule. So देखिए, आपके सामने यहाँ पे जो पहला word है वो है democracy. Democracy actually comes from demos. Demos is people. So मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, demos is people. So democracy क्या होगा? Democracy होगा rule by people. Theocracy comes from theo. Theo is religion. Theo is religion. So theocracy is rule by religion. Adocracy is a system of rule where there is a lot of flexibility. Unlike bureaucracy, which is a little complicated, वहाँ पे हर चीज़ एक proper set manner में की जाती है. Bureaucracy is ruled by officials instead of
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, स्टेट ऑफिशियल्स जो हैं वो अधिकतर डिसीजंस लेते हैं. सो इंडिया में ब्यूरोक्रेसी जो है वो काफ़ी हद तक प्रेवलेंट है. एडोक्रेसी इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ ब्यूरोक्रेसी वेयर देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी. ब्यूरोक्रेसी में देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी, एंड इसीलिए ब्यूरोक्रेसी को हम लोग कम करना चाहते हैं बिकॉज इट्स अ complicated sort of rule. Aristocracy is ruled by few powerful individuals. So aristocrats are those powerful people who hold a lot of command in society. So aristocracy is ruled by few powerful individuals. Plutocracy is ruled by wealthy. American society is plutocratic society in a way because it's ruled by private companies and moreover dominated by rich people. So ये प्लूटोक्रेसी था आपके लिए. इसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज मीडियोक्रिटी. नाउ अगर आप देखें तो मीडियोक्रेसी इज a system of rules where there are a lot of mediocre people, and reward is generally given for mediocrity. So mediocrity is average. So mediocrity वो भी यहीं से ही आया है, क्रेसी से, एंड मीडियोक्रेसी से ही मीडियोक्रिटी आया है. रूल बाय एवरेज, एंड मीडियोक्रिटी का मतलब होगा एवरेज. हम लोग काफ़ी बार यूज़ करते हैं मीडियोकर लेवल का है. सो मीडियोकर इज़ नॉट चीफ, मीडियोकर इज़ समान या फिर एवरेज क्वालिटी. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब to our channel for more such updates. Thank you so much. You all have a wonderful day. Thank you.